हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की नई सीरीज जो कि बेस्ड रहेगी 2022-23 एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अप्रैल स्टार्ट हो गया है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है, हम उसी के साथ साथ अपने चैप्टर्स को लेके चलेंगे। एंड पर डे वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। पहले हम कवर करेंगे एनसीईआरटी एंड आई विल ऑल्सो प्लान टू मेक the day fixed in a week, in which we will be discussing about the most important portion of that chapter from the exam पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th की सीरीज, एनसीईआरटी की सीरीज। एंड इसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 मैंने लिया है यहाँ पे, जिसमें हम डील करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3। Okay, and do not forget to subscribe my channel to getting more updates for this class 10th mathematics. I will be covering entire topic, every chapter, every questions of NCERT, so that you will be seeing that every solution is very easy. So let's get started. So start karte chapter 1, real numbers, exercise 1.1, question number 1 to 3. So let me also tell you about this, what you will get in my channel. So here you will be getting about all CBSE updates, quick solutions to the NCERT, because our main target will be NCERT. Obviously you know that the CBSE exams are 80 to 85% is completely based on the NCERT only. So the main target will be NCERT. We will be taking class 9th and 10th mathematics, and previous year question will be also catered here for practice of class 10 board exam. Okay, so do not forget to subscribe my channel for getting more updates, and hit the notification bell so that you are not missing any videos, and like the videos and share among your friends for the quick easy solution, since this is new series started, so everything will be updated. So let's see for the first one. What is Euclid division algorithm? First of all, so Euclid division algorithm simple आपका division method है, जिसमें आप divide करते किसी चीज को, but उसका representation थोड़ा सा different होता है। ठीक है, जैसे आपने division algorithm पढ़ी होगी कि जो the dividend होता है वो equal to divisor multiply quotient plus remainder। तो same thing, सेम चीजें यहीं पे रहने वाली है। ठीक है, हमें HCF फाइंड करना है using this algorithm. So dear children, first of all, let me tell you, I'm directly catering to the solution of the NCERT from the exercise. If you want me to explain the introduction part also, like what is equivalent division lemma, like if you want me to explain the entire theorem and everything, if you want, then please do comment below. Otherwise, we'll be just taking only the solutions of the NCERT. That is our main target. Okay. So start करते हैं पहले क्वेश्चन से। All right. So the first one, it is given that आपको फाइंड करना है HCF using algorithm of Euclid division. So 135 and 225. सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। Obviously 225 ग्रेटर है। So हम जनरली LCF कैसे फाइंड करते हैं? We find like this: 225 divide by 135, right? इसी तरीके से फाइंड करते हैं। 135 को मैं कितने टाइम्स पढ़ सकती हूँ यहाँ पे? वन टाइम, it will be 1. I'll be getting 135, and if I divide it further, what you will get? 0. और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। ठीक है, now again I have to divide this. Again I have to divide this 135 from the 90. Now what do I get? 90 ones are 90, and remainder will be 45. And 45 को मैं 90 से divide करूँ, it will go 2 times, and remainder will be 0. अब इसको आपको represent करना है using Euclid division lemma. Okay, that is the question. So ये आपका रहेगा रफ पार्ट, जो मेन सॉल्यूशन पार्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? Since 225 is greater than 135, right? So आप क्या लिखोगे? 225, हम 225 को क्या लिख सकते हैं? We can write it as 135 multiplied by 1. क्या करते हैं हम? डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट से, राइट? सो हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे कितना है? 90.
अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, आपको प्रोसेस चालू रखना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एंड 90 कैन बी रिटर्न एज, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी दिस 90, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें कैरी करना है ये 135 को, यहाँ पे 90 को, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, प्लस 0। सो आपने देखा कि कौन सा टर्म ऐसा है जो कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, 45, right? So what you will say, since remainder becomes 0, therefore HCF of 135 and 225 will be 45. So answer आपका क्या हो जाएगा, 45. क्लियर? सो इस तरीके से हमें HCF फाइंड करना होगा, कंसिडरिंग कि आपको फॉर्मेट सेम है, बस उसको रिप्रेजेंट करना है किसके थ्रू, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू. ओके, all right then. So let's move to the second part. Second part में हमें क्या given है, we have been given that 196 and 38220, right? So let's start dividing. So if I start dividing, तो हमें क्या मिल सकता है, हम लिख सकते हैं 38220 is greater than 196, right? So we apply the division lemma to 38220, that is 38,020 and 196 to obtain. क्या obtain करेंगे हम? We'll be obtaining such figure. 38220 can be written as 196 multiplied by 195, right? Plus 0. So मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मेथड, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है? सो 196 into 195 आपको ये नंबर मिल जाता है. सो आप क्या कहोगे, नाउ यू कैन सी दैट रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0. सो यहीं पे हमें एचसीएफ मिल जाएगा, यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली, रिमाइंडर बिकम्स 0, राइट? सो आई कैन से एचसीएफ of 196 and 38,220 will be what? 196, because हम डिवाइड कैसे कर रहे थे 196 से, सो आंसर क्या होगा 196 एंड दैट बिकम्स योर आंसर. ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट जो है हमारा, दैट इज 867 and 225. Now which is greater? We will say 867 is greater than 225. The steps will be same, 225, dividing 867. So if you read a general table, it will be 2 4s are 8 and 25 4s will be 100. So we will take 3 times, okay? And when we take 3 times, what do I get? It will be 450 and 225. So it will be 675, right? And I'll be getting 102 as a remainder. Okay. Now again, I have to divide this 225 from 102. It will be go 2 times, which will give 204. And the remainder will become 51, right? Sorry, it is 255. Okay. Now, when I divide this 51 from 102, I will be getting 151 2 times 102, and remainder becomes 0. So how can I represent this using a lemma? 867 can be written as 200 55 multiplied by 3
plus 102. I just by mistake put it 225. So please do not confused. It is 255 given in the question. Okay. So we take 255. Now, next, this 255 can be written as 102 multiplied by 2. Remainder will be 51. And this 102 can be written as 51 multiplied by 2. Remainder will be 0. So what will we predict from it? Simple. It will be that since remainder becomes 0 here, so we'll say HCF of 867 and 255 will be 51. So answer will be 51. Okay. All right then. So we've taken all three parts. Now let's move to the second question. This is very important question because you know अभी तक ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई के एग्जाम्स में. So this becomes very very important. Okay. Now क्या given है आपको? You have to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, and or 6q plus 5, where q is some integer. Okay. So this is very important. Please have a look on it. Let's start with the solution. So ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर ध्यान रखनी पड़ती है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज जस्ट हलवा. आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेट करना है, जो मैं लैंग्वेज लिख रही हूँ ना, आप उसी लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. ओके. सो क्या करोगे, पहले आप लिख करोगे लेट ए बी एनी इंटीजर. ओके. एंड बी को आप लेट कर लो 6, क्योंकि आपको फॉर्म क्या बनाने, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. सो हम 6 को बी लेट कर देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज रिटन एज bq plus r. ओके. सो हम इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम बी की जगह हम क्या लेते हैं, 6 ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे एल्गोरिथम या लेमा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम होती है. सो आई कैन राइट हियर ए विल बी इक्वल्स टू, बी को हमने 6 माना है ना, इट विल बी 6q plus r. ओके. फॉर सम इंटीजर q, एंड r की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 6q plus r मतलब 6 क्या है, आपका डिवाइजर है, राइट. जो डिवाइड मतलब जो डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा उससे लेस होगा. सो आर जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक्स इन इट. आर जो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट लेस देन क्या हो सकता है, 6. 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपको तब तक डिवाइड करते हो जब तक वो रिमाइंडर जो है वो 6 से कम ना हो जाए. ठीक है. तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0. So possibility of remainder will be what? It can be 0, it can be 1, 2, 3, 4 and 5. ये तो रहेंगे possibilities. Now ये सारी possibilities के बाद हम क्या लिख सकते हैं, therefore a की possible values क्या हो जाएगी अगर हम remainder की values put करें. a can be 6q, right? Or it can be 6q plus 1, or 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 और 6q plus 5. ये पॉसिबल वैल्यूज रहने वाले हैं किसकी, a की. अब क्वेश्चन में क्या बोला, आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेना है. सो डियर चिल्ड्रन, अगर आप 6 का टेबल पढ़ते हो, ठीक है, सो q कोई भी इंटीजर्स है, 6q को अगर मैं कहूँ तो उसका आंसर क्या रहने वाला है, अगर आप 6 की जगह q की जगह 1 रखो तो 6 1 6 आएगा, 2 रखोगे तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24. सारे ही क्या मिलेंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे, तो हमें ये वाला नंबर नहीं लेना है. 6q plus 1, सपोज q is equal to 1,
तो 6 1 6 और 1 ऐड करने पे 7 हो जाएगा, 6 2 12, 1 ऐड करने पे 13 हो जाएगा, 6 3 18 और 1 ऐड करने पे 19 हो जाएगा। मतलब ये वाला नंबर जो है हमेशा में क्या देगा, ऑड नंबर देगा, तो हमें ये वाला नंबर लेना है। सिमिलरली अगर कोई इवन नंबर में इवन ही ऐड करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, तो हम ये भी नहीं ले सकते। फिर ऑड नंबर क्या मिलेगा, हमें इसमें से मिलेगा, इसको भी नहीं ले सकते एंड इसमें से हमें ऑड नंबर मिल जाएगा। सो हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, सो वी विल राइट दैट। अब यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको सिंपल लैंग्वेज रखनी, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि ये क्रिएट करता है कंफ्यूजन बहुत बार। सो यू विल से दैट ऑल्सो 6q plus 1, 6q plus 2, sorry 6q plus 3 or 6q plus 5 will give odd positive integer, hence करके क्या लिखोगे, ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दोगे आप यहाँ से। Any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3, 6q plus 5। ठीक है, लास्ट में ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं मार्किंग की, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, सो 1 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ इतना लिखने पे आर की वैल्यू तक, और 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा एंड पे। बीच में अगर कोई मिस्टेक्स है तो यू नो द मैथ्स इज ऑल अबाउट द स्टेप मार्किंग, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सो लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस लिख के आपको शो दैट वाला वर्ड छोड़ के ना लास्ट में पूरा कॉपी कर देना एज इट इज, एंड दैट विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सी, तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आने वाले 4th और 5th क्वेश्चन जो है इसका वो हम कैटर करेंगे अगली वीडियो में। सो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. ठीक है, the two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, दो ग्रुप बनाएगा जिसको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। What is the maximum number of column in which they can march? तो जब भी बात आती है ना कि कितना मैक्सिमम नंबर रहने वाला है इसको अरेंज करने का, किसी भी अरेंजमेंट की बात होती है, वो पूछता है मैक्सिमम नंबर। सो हमेशा आपको क्या फाइंड करना होता है उसमें, HCF। तो इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है। बेसिकली इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करना है। So you can use your own method of finding the HCF. Okay. So let's start with the solution. So solution क्या रहेगा, HCF of 616 and 32. क्या आएगा इसका आंसर? It will be the HCF of this can be, अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करोगे तो it will be 616 can be written as 32 multiply by 19, रिमाइंडर इसमें रहेगा 8। फिर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 multiply by 4, रिमाइंडर रहेगा 0। So HCF of 616 and 32 will becomes what, 8, right? So HCF जो है वो क्या बताएगा, it will give the maximum number of column. Okay, so आप लिखोगे लास्ट में hence the maximum number of columns in which they can march is 8. Okay, all right. So this was all about today's videos, and we covered question number 1, 2, 3, right? So we'll be meeting in another video. Till then, take care and do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching. We'll be meeting soon in another video, and do like the video if you really liked it. And अगली वीडियो में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and 5, and will be coming soon, meeting soon. Please do subscribe my channel for getting more updates. Daily ही हम वीडियो लेकर आने वाले हैं exercises की, and we'll be completing this chapter, and then we'll be going with another chapter as well. And the series is begin, so do not forget to hit the subscribe button. Thank you. Thanks for watching.